ऑडिबल ना? ऑडिबल क्या? हाँ सर। ओके, ये किया है क्या क्वेश्चन ये सारे? यस सर। ओके, लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट question was okay, let's see. uh if you see this question, I've tried to cover the variations possible out of these three questions. देखो पहली बात क्या है कि they have given you the KSP value है ना, solubility product is KSP. That means we are knowing that KSP here is 4.9 into 10 raised to minus 9, which we can write as 49 into 10 raised to minus 10. Now it is talking about CaCO3 in pure water. We have learned that if I try to write KSP correlation with CaCO3 की solubility, तो we write 1 is raised to 1 into 1 raised to 1 into S raised to 1 plus 1 है ना. That means we were saying S square was KSP. So now S will become root under KSP. That means it is 7 into 10 raised to minus 5. Will this be the answer? No sir. Because they have asked you first thing milligram of CaCO3, that too not in 1 liter, because this solubility was considered to be mole per liter, है ना? And that's why if you want to convert that in 100 ml, if you want to calculate in 100 ml moles of, या फिर you can find out solubility in 100 ml, so this will become, or you can just directly convert it into. So this is 7 into 10 raised to minus 5 into 100 gram per liter. But that is again in liter. So per 100 ml, it will be 1/10 of that. Hai na? So 7 into 10 raised to minus 5 into 100 upon 10 milligram. 1 minute. Right now, it is still gram only. Gram per 100 ml. And then if I have to convert that, ये देखो क्या हो गया, 7 into 10 raised to minus 4 gram per 100 ml. And if you convert that into milligram, it will become 7 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to 3 milligram per 100 ml. And that's why it becomes 0.7 milligram per 100 ml. Is it okay? Clear na? Any doubt? चलो नेक्स्ट पे आते हैं. ये क्लियर ना सबको? कुछ तो बोलो भाई, सब लोग म्यूट पे पड़े हुए हो. यस सर, क्लियर. ओके, नेक्स्ट वन. This is solubility product of PBI. So if you see solubility product of PBI2 is given this much, and then it is asking solubility in pure water if it is 80% ionized. If you revise that first part जो मैंने करवाया था, इसमें मैंने बताया था we were having a formula जिसका special case लिया था. If alpha is given, we need to use the first one, ये वाला है ना. And that's why इस question में we need to write, in this question we need to write in pure water, we have to write KSP will be. And now if you see PBI2 का formula is AB2 type, which will give you 1 cation and 2 anion. And यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S alpha raised to 1 plus 2. And that means we have got 2.048 into 10 raised to minus 9 will become, यहाँ तो 4 आ जाएगा, into S 0.8 S raised to 3 है.
So we'll say 0.8 because it is 80% ionized raised to 3 into S raised to 3. Now if you calculate it ना, देखोगे ये पूरा मिल के ना इसके बराबर हो जाएगा. ओके, 2048 वाला गेम खेला क्या कभी मोबाइल पे? 2 raised to 11 जो होता है ना, that becomes 2048. Okay, so that's why if you see this is, या तो ऐसा कर लो 2048 into 10 raised to minus 12 कर लो. This will become 2 raised to 11 into 10 raised to minus 3 into s cube. So ultimately it gives you s cube is 10 raised to minus 9. So s is 10 raised to minus 3. And now we need to see it. They are not asking you solubility, they are asking you PV2 plus का concentration. If you remember हम लोगों ने बात की थी कि PbI2 solid से, if I am writing the reaction, if the solubility was S, so we were saying that at saturation, which is nothing but at equilibrium वाला condition, if S is the solubility, तो इसका हम लोगों ने बोला था XS alpha was the concentration, है ना? इसको XS alpha बोला था और इसको YS alpha बोला था. So for this time, X is 1, alpha is 0.8. So this is 1 into 0.8 into S. And that's why we'll write this is 0.8 into 10 raised to minus 3. Or we can also write 8 into 10 raised to minus 4. For this thing, we are writing y is 2 into 10 raised to minus 3 into this is 0.8. So this becomes 1.6 into 10 raised to minus 3. So we are saying at saturation, we'll be getting Pb2 plus as 8 into 10 raised to minus 4, or we can also write 0.8 into 10 raised to minus 3, whatever will be in the option. And second thing is I minus will be double of that. Hai na? So these are the answers. Is it okay? देख लो कहीं डाउट है तो पूछ लोगे. Third case, I mean the third pending homework. This was about pH. No, there are multiple methods. किसी ने किया है क्या? Yes, sir. Any answer? Sir, here, can we just write the KSP as PKB? KSP as? PKB. No. How can you write that? Because here MgOH twice is not aqueous, it is solid. Okay, when we write KSP now, it is for the reaction in which we are having solid substance giving you aqueous ions. Okay, so the equilibrium constant for this reaction was called KSP. Is it okay? This is solid, not aqueous. Okay, that's the first point. Second point is there are multiple methods. दो तीन method निकाल सकते हैं इसमें. Now it has given you pH is equal to 12. So at saturation, it is saying pH is 12, which means POH is 2. POH is 2, which means OH minus is 10 raised to minus 2. Is it okay? So we are saying at saturation, OH minus is 10 raised to minus 2. So definitely Mg2 plus will be half of that, huh? Because coefficient is half than the OH minus का coefficient. तो यहीं से लिख देंगे KSP is nothing but Mg2 plus into OH minus का square, and that will be half into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2 का square. That will give you half into 10 raised to minus 6, or you can also write 5 into 10 raised to minus 7. Is it okay? There is another method also, MgOH twice AB2 type का salt है, so this was method 1. Method 2 is
if we are having this reaction, तो we are saying यहाँ पे KSP जो होगा ना, that will be 4s cube if alpha is not given. Is it okay? And that's why, and we are saying OH minus जो होगा 2s होगा. OH minus is nothing but 2s, and that's why we'll say 2s is equal to 10 raised to minus 2. That means s is equal to half into 10 raised to minus 2. And that's why we'll say KSP will be 4 into half into 10 raised to minus 2 raised to 3. And that's why we can again write 4 into 1 by 8 into 10 raised to minus 6, which is half into 10 raised to minus 6, or we can also write 5 into 10 raised to minus 6. Is it okay? Clear ना? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी रिलेटिव सॉलिबिलिटी हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देख लिया था. नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू सेक्शन, which is we'll be talking about solubility of the sparingly soluble salt in aqueous solution, but it will contain some substance which is having a common ion. So right now I'll be taking a soluble salt which will be giving you the common ion, but उसके बाद धीरे धीरे इसको फिर change करेंगे. So now we are going to talk about the new section, in which if you see I'll be talking about common ion का effect. So definitely common ion will suppress the ionization or the solubility of the sparingly soluble salt, है ना. मान लो ये हमारा sparingly soluble salt है. In that, if I'm putting some A plus का source या B minus का source, that will cause the backward shift, है ना. Is it okay? कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा यार, कुछ तो बोला करो. Yes, sir. Okay. So basically, if you see this case, यहाँ पे what I told you, like मान लो AgCl is the sparingly soluble salt in presence of NaCl, which is the source of Cl minus, or in presence of AgNO3, which is the source of Ag plus, will cause less solubility of AgCl in that solution, है ना. तो पहला part जो आ रहा है, that is because of this common ion effect, solubility will decrease, है ना. Solubility decreases. That's one part. Now, greater the concentration of common ion, less will become the solubility of that sparingly soluble salt. That second part. So, ये qualitative part. Now, let's come to the quantitative part. And in that, we need to see, मान लो soluble salt जो है ना, sparingly soluble salt जो है वो A भी है, and there is some soluble salt A dash भी लिख दिया इधर. ठीक है. और इसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ दिस soluble salt, the solubility of sparingly soluble salt is S1. Is it okay? Now what we need to do at saturation, so what we'll write, if the soluble salt was already present, so I'll write initial condition is we are saying, we are assuming that that soluble salt was already present, and that will be giving you B minus. Already is, मान लो concentration was some C. Let that concentration was C. What we are saying, concentration of common ion from soluble salt, we have assumed that to be C in this case. Okay. Now after knowing that, at saturation, let its solubility is S1. So formation of A plus will be S1, but this will total be S1 plus C. And यहाँ पे we have taken A B type का ही salt because we don't want any coefficient, क्योंकि वो raise to में चला जाएगा, and then it will be a very difficult equation. We'll talk about that later also. But right now we are talking about AB type का ही है. So we are saying at saturation A plus into B minus is equal to KSP. And that gives you a quadratic equation, S1 into S1 plus C is equal to KSP. Now this is a quadratic equation. Now we need to take a decision whether to solve this quadratic or not. Okay. Now while taking that decision, again जो हम लोगों ने acid base वाले solutions वगैरह में जो काम किया, तो वही करना है. क्या करना है? If soluble salt was not present,
देन इसकी सॉल्बिलिटी कितनी आती, या फिर जो कॉमन आयन आया उसकी उसकी उसका कंसंट्रेशन कितना आता, तो दैट वाज रूट के एस पी एन। अभी जस्ट देखा तो CaCO3 के लिए इट वाज KSP वाज रूट KSP, solubility was root KSP है ना। so if that root KSP is less than 1/10 of C, then अभी तो solubility और भी कम आने वाली है। इज इट ओके? अभी जस्ट हम लोगों ने बोला, मान लो NaCl was not there and if I am putting AgCl, तो root KSP will be the solubility, so that means Cl minus का concentration would have been root under KSP, square root of KSP। अभी तो उससे कम आने वाला है ना। so that's why what we are saying na, just to check whether to solve this equation or not, what we will do, check, and this I am writing as a general line, and then we'll go to for this particular case. What we need to check, uh, calculate concentration of common ion from sparingly soluble salt, and that is case वन, जो अभी तक हम लोग करते आए थे ना, एस का रिलेशन KSP से इन प्योर वाटर, soluble salt in absence of the soluble salt। Okay, now if that concentration of common ion from sparingly soluble salt in absence is coming some number, let that be coming C naught। Okay, now we'll say if that C naught, if that C naught is less than equal to 1/10 of C, then we'll say concentration of common ion, अभी तो और भी कम आने वाला है, will be approximately equal to C। Is it okay? So in above given case, we'll say this C naught will be nothing but root KSP है ना, क्योंकि AB टाइप का सॉल्ट दिया। Hence we'll say if this root KSP is less than equal to 1/10 of C, then we'll write B minus total, जिसको हम लोगों ने S1 plus C लिखा, तो we'll write that to be C only। And अगर ऐसा हुआ, if it is happening, then we'll write S into C is equal to KSP, and that's why we'll write S will become KSP upon C। Simple। And then if they're asking you, मान लो A plus का पूछा कितना होगा, तो we'll say it was S, and that's why it will be KSP upon C। And जो common ion B minus है, this will be KSP upon C। And जो common ion B minus है, जिसको हम लोगों ने S plus C लिखा था, that has become approximately C only। Okay, बट मैंने ये जनरल केस दे दिया है, दिस इज द जनरल चेकिंग। मान लो AB2 टाइप का सॉल्ट देगा, देन विल राइट S इन एब्सेंस ऑफ एनी सॉल्युबल सॉल्ट विल बी KSP अपॉन 4⁻⁴ है ना। 4s³ was KSP, so S will be KSP upon 4⁻⁴, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया भी था। इफ यू सी द सेम क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे आ रहा है, देखो ना, MX2 टाइप का आया है, तो फिर प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी इतनी आती थी। फिर इसको चेक करेंगे वेदर इट इज 1/10 से लेस है या नहीं, in comparison to the common ion concentration coming from the soluble salt, and then we'll check कि वो 1/10 से कम है, तो फिर इसके को इग्नोर कर देंगे। if it is not coming, then you have to solve the equation। तो हिंट क्या है इसका, क्वाड्रेटिक आया तो फिर यहाँ अपने को चेक करना है क्यूबिक या रेज टू 4 में या रेज टू 5 में आ गया, तो अपनी औकात से बाहर है ना सॉल्व करना। एंड दैट्स व्हाई डेफिनेटली वो अजम्पशंस वैलिड होंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्यूबिक वगैरह आ रहा है, फिर एजम्पशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना है कि यहाँ तो सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर एजम्पशन वैलिड नहीं होगा। So if they have asked you that question, तो definitely they want you to solve। तो assumption वैलिड होगा तभी तो सॉल्व करेंगे ना। एंड दैट्स व्हाई अगर क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ आ जाए ना, तो assumptions आर वैलिड, अज्यूम दैट। ठीक है, सो अदरवाइज सॉल्व इक्वेशन 1
to get S ka value. And in this case, S cannot be ignored in comparison to S to C. So if they are asking you A plus batao, तो that was S के बराबर. And if they are asking you B minus which was the common ion, तो ये S plus C लिखना होगा, जो कि जिसमें S का वैल्यू we have got that. हाँ, इसी में हिंट क्या है? या तो क्वाड्रेटिक था इसलिए दे में आस्क यू टू सॉल्व इट आल्सो. हिंट क्या है? इफ यू गेट an equation of order greater than 2, then assumptions must be valid to solve it. है ना? ओके, चलो इतना हो जाने के बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. If you have any doubt to ask me. ऐसा ही होने वाला है. अभी जितने केसेस देखेंगे ना, you'll see that कि दो दो चार चार लाइन की थ्योरी होगी and then you'll be having questions. Now it is totally mathematical. जो सीखना था, समझना था, एक लास्ट टाइम पे हम लोग जब इंडिकेटर पढ़ेंगे then only we will have that थोड़ा सा theoretical discussion. Otherwise it is totally numerical now. दो दो लाइन की थ्योरी and then numerical questions. सर हाँ जी. सर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होता है? ओके, लेट्स सी दैट. प्रोडक्ट एडिशन से कौन सी शिफ्टिंग होती है? बैकवर्ड है ना. तो मान लो इफ आई एम हैविंग एक्व सॉल्यूशन ऑफ AgCl इन इफ आई एम एडिंग NaCl और NaCl वाज प्रेजेंट, तो NaCl इज द सोर्स ऑफ Cl माइनस, है ना. यस. Cl minus will be one of the product in the solubility of AgCl, है ना. तो that will cause the backward shifting. And backward shift का मतलब क्या है? जो ions राइट साइड में दिख रहे हैं ना, वो solid substance बनाएंगे ना. And making the solid substance means less solubility ना. जितना soluble था उसमें से कुछ नीचे चला गया, है ना. That's why we'll say कि solubility will be decreased. Okay. ओके. तो विल बी सीइंग मल्टीपल केसेस. अभी इसके बाद देखेंगे कि दो स्पेनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विद कॉमन आयन आएंगे तो क्या होगा. एंड विल सी मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी ना जिसमें सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस. बाद में जाकर देखेंगे वी कैन हैव सम फैक्टर्स जिसके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है. उसी में से एक केस दिस टाइम एडवांस में पूछा था. ओके, विल सी दैट पार्ट. अभी पहले सॉल्युबिलिटी गिराने वाले केसेस देख लेते हैं, देन विल सी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाले केस. Okay, we have got one answer. Let's see. ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है. देखो AgCl है तो इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट. हाँ, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है क्वेश्चन ना, इसको कंसेप्चुअली ही डील करना था. बिकॉज वी हैव गॉट AB टाइप का, तो दिस इज सिमेट्रिकल इन टर्म्स ऑफ Ag एंड Cl, है ना. तो कॉमन आयन Ag प्लस आए या Cl माइनस आए, इट विल हैव सेम इफेक्ट. इट विल नॉट बी वैलिड इफ आई एम हैविंग समथिंग लाइक Ag2CrO4, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा. देन Ag प्लस एज अ कॉमन आयन, इफ कॉमन आयन का डिफरेंट इफेक्ट होगा, CrO4 2 माइनस एज अ कॉमन आयन का डिफरेंट इफेक्ट होगा. इज इट ओके? क्लियर है? नाउ अभी यहाँ बिकॉज इट वाज AB टाइप का सब्सटेंस ना, तो इक्वेशन तो यही आने वाला है, S into S plus C is equal to KSP. Now sometimes S plus C will be Ag plus, if Ag plus is the common ion, S plus C will become Cl minus if Cl minus is the common ion, है ना. तो मैथमेटिक्स को क्या पता कि तुम किसके टर्म में काम कर रहे हो, है ना. So that's why we'll simply see कि what are the concentrations of the common ion. तो फर्स्ट में
concentration of common ion का मतलब है concentration of Ag plus. If I want to write concentration of common ion, it is nothing but concentration of Ag plus, and that is 0.1. Second case में, if I talk about concentration of common ion, that is nothing but Cl minus, and that is 0.2. Third case में, there is no common ion because you are having pure water. And fourth case में, we have got concentration of common ion is again Cl minus is the common ion in this case, and that will be how much? बताओ जरा. How much is the common ion का concentration? 0.15 क्या? No, 0.3. Into 2. One salt is going to give you 2 anions, है ना? And that's why the concentration of common ion is not 0.15, it is 0.3. And right now we have learned that the greater the concentration of common ion coming from other source, less will be the solubility, है ना? So if I write concentration of common ion, and again I am giving that caution कि it was AB type of salt, इसलिए काम चल रहा है Ag plus आए या Cl minus आए. If I am having solubility formula like A2B, AB2, AB3, then presence of Ag plus will have different effect than presence of Cl minus. क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन अलग आ रहे हैं, उसके पावर अलग आ रहे हैं ना. And that's why यहाँ पे काम चल जाएगा. तो इस ऐसे केस में यही पूछेगा तुमसे. तो concentration of common ion is least in third case, उससे ज्यादा आ रहा है फर्स्ट केस में, और उससे ज्यादा सेकंड केस में, एंड उससे ज्यादा फोर्थ केस में. And we have learned that greater the common ion, less will be the solubility, है ना? And that's why if they are asking you solubility of AgCl in these solutions, we'll say 3 will have the highest solubility, then 1, then 2, and then 4. This is the answer. हर्ष क्या गड़बड़ किया? मैंने आई थिंक उल्टा ऑर्डर दिया. ओके, ये भी ध्यान से रखना है ना? You have said 4 2 3 1. 4 2 1 3. Okay, हाँ. Understood ना क्या प्रॉब्लम हुआ? It was asking you decreasing order of solubility. तो greater the common ion, less will be the solubility, है ना? Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो दिस वाज लाइक इसको क्वालिटेटिवली ही सॉल्व करना था. इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व इट क्वांटिटेटिवली, बट इफ आई गिव यू अनदर केस, and that case will be a combination of questions so that you can identify कहां पर assumptions valid होते हैं, कहां पे assumptions valid नहीं होते हैं. Solve this one. Now these are not 4 options, these are 4 questions. What I do ना, what I'll do, solve only एक सेकंड सॉल्व कर लो, और एक चलो सेकंड भी क्या करोगे, सेकंड तो ऑलरेडी करके दिया. एक काम करो, थर्ड एंड फोर्थ करो. डू थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों सॉल्व करो. ये दोनों हो गया तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत ही.
Any answer? Okay, we have got answers. Okay, enough time given. हो रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है? तो पहली चीज, they have not given you solubility product, है ना? तो that we need to find out. और उसके लिए देखो क्या दिया है ना, solubility in pure water is given, and solubility in pure water का relation with KSP was a direct relation, है ना? So that's why we are saying KSP will be, because it is AB type of formula, so it will be solubility in pure water का square, है ना? So that's why we need to write KSP will be nothing but 10 raised to minus 5 का square, which is 10 raised to minus 10, and for that this was given. Now this दूसरा use क्या है? Solubility in pure water was 10 raised to minus 5. That means in pure water, one more information we have got. In pure water, concentration of common ion भी जो होता है ना, Ag plus ले लो या Cl minus ले लो, that will be 10 raised to minus 5 only. अभी इसी को चेक करना है कि दिए हुए कंसंट्रेशन से, यहां से concentration of Cl minus from BaCl2 is equal to 0.1 into 2, that is 0.2. So this number, if I'm solving the third question, I'll say this number 10 raised to minus 5 is less than 1/10 of 0.2, and that's why we can directly write S into S plus C की जगह directly C लिख देंगे ना. I was calling it C, and that was equal to KSP. So that's why S becomes KSP upon C, which is 10 raised to minus 10 upon 0.2. That becomes 5 into 10 raised to minus 10. But if you see the fourth question, now ये जो 10 raised to minus 5 है, concentration of Cl minus in pure water is 10 raised to minus 5. This is greater than 1/10 of Cl minus from NaCl, है ना? क्योंकि ये खुद भी this number itself is equal to 10 raised to minus 5, तो उसके 1/10 से 10 raised to minus 5 ज्यादा ही है ना, and that's why we can't have that assumption valid, so we need to solve the quadratic. And that's why in this case we need to write S into S plus C was equal to KSP, and that means we have got S square plus C times S minus KSP is equal to 0, which means S square plus 10 raised to minus 5 into S minus 10 raised to minus 10 is equal to 0.
So if you solve it, S is coming minus 10 raised to minus 5 and plus minus लिखने का sense नहीं. If I write minus, we'll be getting negative solubility. So we need to write plus only. And under root B square is 10 raised to minus 10 and this will become plus 4 into 10 raised to minus 10 upon 2. So that gives you solubility ka value will become root 5 minus 1 into 10 raised to minus 5 by 2. And root 5 is 2.236. So minus 1, 1.236, uska half will be 0.618 into 10 raised to minus 5. This is the answer. And now if you can see that this is not 1/10, say less of 10 raised to minus 5, it is 62% of that, and that's why we can't ignore it. है ना, S को C के सामने ignore नहीं कर सकते. Is it okay? Now, if it is asking you in fourth case, if it is asking you to calculate the total concentration of Cl minus, if it is asking Ag plus, then we'll write it was S only, which is 0.618 into 10 raised to minus 5. But if it is asking Cl minus, we can't write S, it was S plus C. Cl minus total, if it is asking, in this case, so that was S plus C. So this will become 1.618 into 10 raised to minus 5. Is it okay? But question was about solubility only. But if they are asking you ions ka concentration, we need to be very clear. Is it okay? चलो एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं. Solve this one. तो पहला वाला वैल्यू इन प्योर वाटर है ना? कौन सा जो 10⁻⁵ लिखा था ऊपर? नहीं नहीं नहीं, नीचे यही क्वेश्चन में नहीं 8 नहीं, इंटू ये 10⁻8 है ना? फिर से. अच्छा ये 8 इंटू 10⁻8. हाँ व्हाट इज इट? ये वैल्यू किस चीज का है? हाँ, मतलब इन प्योर वाटर है कि कैसे है? KSP का वैल्यू फॉर अ गिवन सॉल्ट वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन, टेम्परेचर. सो इट इज ऑलवेज वैलिड, है ना. KSP देखो इधर भी वही लिया था जो प्योर वाटर के लिए लिया था ना. KSP doesn't matter कहाँ ले रहे हो, it depends only on temperature for a given salt. Solubility will be different in different solutions. Pure water के solubility को we can directly relate with KSP. That was the point. But KSP का value will not depend on the anything which is present in the solution. Okay, I will wait for the other people. Okay. ये तो एक बार वापस से चेक कर लो.
तो एस का वैल्यू बहुत अजीब आ रहा है. अजीब मीन्स मतलब KSP इज इक्वल टू 8s³ आएगा. 8s³ कैसे आएगा? SRF2 ना. हाँ, तो दो क्या अनालिस. नहीं मारने का है. 1 raised to 1, 2 raised to 2, s raised to 1 + 2. हाँ. कितना हुआ वो? तो 4. ओके. But that was in pure water. Now I think you have got the right answer. So if you want to solve it ना, तो जुगाड़ करने का एक ही तरीका दिख रहा है. 20 raised to 1/3 into 10 raised to -3. ओके. इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. वी नो दैट कि ये वैल्यू जो है ना, वो 2 और 3 के बीच में कुछ आने वाला है. दैट मच वी नो. अभी इन गिवन सॉल्यूशन, अच्छा ये s अगर इतना आता तो f माइनस कितना आता? SRF2 तो दो f माइनस देने वाला है ना. तो इफ s इज दिस मच, ये प्योर वाटर की बात कर रहे हैं जस्ट टू चेक दैट अजम्पशन. लेकिन आई टोल्ड यू कि अगर क्यूबिक जैसा आने लगे ना, तो अजम्पशंस आर डेफिनेटली वैलिड, अदरवाइज यू कांट सॉल्व द इक्वेशन. वो भी आगे यूज कर लेंगे, बट अभी के लिए देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द प्रॉपर मेथड. तो f माइनस इन प्योर वाटर ये कितना आता? तो दैट विल बी 2s, which means 2 times 20 raised to 1/3, which is having value in between 2 and 3, into 10 raised to -3. तो ये 4 से 6 के बीच का कोई एक नंबर होगा, into 10 raised to -3 is coming the solution of concentration of f minus. Now the given soluble salt is NaF, so we are writing f minus from NaF is equal to 0.2, which is 2 into 10 raised to -1. So definitely we can say na, f minus from SRF2 in pure water, वो देखो ना, साफ साफ दिख रहा है, लेस देन 1/10 से तो दिख ही रहा है ना. क्योंकि लेस देन 1/10 इसका करेंगे तो विल बी गेटिंग 2 into 10 raised to -2, which is 20 into 10 raised to -3. और ये नंबर मैंने बोला, इट इज इन बिटवीन 4 and 6. तो 4 and 6 is less than 20, and that's why we are saying that this assumption is valid, and hence we'll say f minus total in given solution can be assumed to be f minus from NaF only, and which is 0.2. Now we'll be writing in given solution after taking the in given solution, let solubility be of SRF2 be, कुछ S1 assume कर लो क्योंकि पहले ही ऐसा assume किया हुआ था. So now we'll say Mg2 plus will be S1 only, and F minus जो अभी मैंने बोला था ये 2S1 आता है इधर से, और इसको अगर मैंने C assume SR2 कर प्लस लिया ना. तो 2S1 plus C आता. क्या बोला क्रिश? SR2 प्लस. अच्छा सॉरी, हाँ, this one is SR2 plus, not Mg2 plus. हाँ, this one is SR2 plus. Now ये जो है, this is approximately C only, that means 0.2. And now we can write in the given solution also, if it is reaching at saturation, so we'll have SR2 plus into F minus ka square will be equal to KSP. And that's why we'll be writing that S1 into 0.2 ka square is equal to 8 into 10 raised to -8. And that's why if you calculate it, S1 is coming 2 into 10 raised to -6, and that is the solubility they are asking you, na? Solubility to पूछ रहा है. This will be the answer.
और ये नहीं करने जाते तो देखो क्या होता है, S1 into 2S1 plus C का स्क्वायर will be KSP, क्वाड्रेटिक क्यूबिक सॉल्व करना पड़ता ना। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है तो डेफिनेटली वी कांट सॉल्व इट विदाउट अजम्पशन, है ना। एंड दैट्स व्हाई वहीं से हिंट मिल गया था कि अजम्पशन वैलिड होगा, तो इसलिए मैंने बोला एग्जाम में इतना नहीं करने का, ये जो मैंने किया है ना ये वाला पार्ट इतना नहीं करने का है इफ यू आर गेटिंग द क्यूबिक इक्वेशन, बिकॉज क्यूबिक हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते अपने खुद से। डेफिनेटली अ कंप्यूटर कैन सॉल्व इट बट वी कांट सॉल्व इट मैनुअली ऑन पेपर, एंड दैट्स व्हाई इफ दे हैव गिवन यू एनी इक्वेशन व्हिच इज हैविंग ऑर्डर मोर देन 2 ना, तो डेफिनेटली अजम्पशन वैलिड रहा होगा तभी तो दिया है सॉल्व करने। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, in which we'll be having two sparingly soluble salts present in the same solution and they'll be having common ion. तो they'll be imposing, अब ये देखो ना, जैसा दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड वाला केस देखा था हम लोगों ने, दोनों एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाते थे, यहां भी वही केस है। We are having two sparingly soluble salts which are having a common ion, and that's why both of them are going to impose common ion effect on each other, and that's why solubility of each salt will decrease, and this was the qualitative part. Is it okay? अब आते हैं कैलकुलेशन में। मान लो अपने पास कोई दो सॉल्ट, कोई भी दो ले लो, इफ आई एम हैविंग ए बी और ए बी डैश टाइप का, देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट विल बिकम द केस ऑफ साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था, कुछ टाइप का केस दिखेगा। देखो कैसा दिखेगा, मान लो एक सॉल्ट ए बी और दूसरा सॉल्ट ए बी डैश है, तो पहले ने ए प्लस दिया, बी माइनस दिया, दूसरे ने ए प्लस दिया और बी डैश माइनस दिया। मान लो वी अज्यूम दैट लेट simultaneous solubilities of AB and AB dash be S1 and S2। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का मतलब एक दूसरे के प्रेजेंस में। इसका मतलब अगर इसकी सॉलिबिलिटी AB की सॉलिबिलिटी S1 है तो B माइनस तो S1 ही बनेगा, बिकॉज द ओनली सोर्स ऑफ B माइनस वाज AB सॉलिड। वैसे ही बी डैश माइनस जो होगा वो एस टू बनेगा, बट ए प्लस पहले वाले में एस वन बनेगा, दूसरे में एस टू बनेगा, तो नेट क्वांटिटी और नेट कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस विल बिकम एस वन प्लस एस टू, है ना। इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई टेंशन नहीं आगे। आगे फिर क्या करेंगे, एट सैचुरेशन विल राइट ए प्लस इनटू बी माइनस इज इक्वल टू, इसके लिए केएसपी को केएसपी वन अज्यूम किया है, तो दैट गिव्स यू एस वन प्लस एस टू into S1 is equal to KSP1. I'm calling it equation 1. वैसे यहाँ पे if you solve it, A plus into B dash minus will become KSP2. And now if we write S1 plus S2 into S2 will become KSP2. I'm calling it equation 2. जैसे ही add करोगे कुछ फायदा हो जाएगा। If I am applying 1 plus 2, देखो ना क्या हो रहा है, we are getting S1 plus S2 का whole square, है ना, on the left side। S1 plus S2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में भी S1 plus S2 आएगा, and that's why we are getting S1 plus S2 का whole square as KSP1 plus KSP2। और ये एडिशन निकाला भी क्यों, because if you see S1 plus S2 is nothing but the concentration of the common ion, so that will become under root KSP1 plus KSP2। now so this was the concentration of common ion। if you see यहाँ पे common ion was A plus and that was having concentration S1 plus S2, and that will become simply KSP1 plus KSP2। Is it okay? Now if it is asking simultaneous solubility बताओ, S1 S2 का वैल्यू बताओ, तो from 1 we can write S1 is nothing but KSP1 upon S1 plus S2, and that's why it will become KSP1 upon under root KSP1 plus KSP2, and similarly from 2 we can write S2 is becoming KSP2 upon S1 plus S2,
and that's why it is becoming, नीचे लिख देता हूँ. So H2 is becoming KSP2 upon under root KSP1 plus KSP2. Is it okay? और concentrations of anions भी वही आ रहा है. So B minus is nothing but S1 के बराबर and B dash minus is nothing but H2 के बराबर, and we have calculated these two values. है ना? Any doubt? क्योंकि इसके आगे फिर से क्वेश्चन. If you don't have any doubt, then solve this question. नंबर सेट करके दिए हुए, अदर देन लास्ट वाला पार्ट ना, बाकी सब कैलकुलेशन बहुत इजी है. हर्ष ये कौन सा आंसर दिया है? प्रिशा का आंसर इज राइट फॉर द फर्स्ट वन. हर्ष ये कौन सा आंसर है? 1 sir. 1 में भी दो दो वैल्यूज है ना. ओके, you have got the KSP of what? KSP 1 and 2, right? Yeah, but you have reported just one value, no? No sir, I sent both. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. हाँ तो उसको शॉर्ट में कर सकते हैं ना. 10 into 10 raised to minus 11 is nothing but 10 raised to minus 10 simply. ओके ठीक है, चलेगा. क्रिश तेरा एक गड़बड़ है. Your one answer is wrong.
ना क्रिश, एक्स क्या है तेरा? एक्स तूने कुछ अज्यूम किया है? क्या किया है? व्हाट इज योर एक्स? तो रेशियो के लिए कांस्टेंट होता है ना कुछ, तो मतलब ओके, 5x एंड 12x ऐसा। हाँ वैसे तो 5x 1 into 10⁻⁻10 होगा ना? 5x इन, हाँ 1 into 10⁻10। 5 into 10⁻10 बोल दिया। ओह अच्छा, ओके, तो समझा। ठीक है। तो बेसिकली ये ए बी टाइप का ही दो सॉल्ट है, विच इज हैविंग कॉमन कैटायन, एंड दैट्स व्हाई अभी जो सीखा है, इफ इट इज ए बी टाइप, अभी देखो ये ए बी है और ये ए बी डैश है ना, दैट्स व्हाई जो फॉर्मूला किया है दैट इज वैलिड, बट इट विल नॉट बी वैलिड इफ आई एम हैविंग ए टू बी एंड ए टू बी डैश, ऐसा कुछ है ना। वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। ए बी टाइप का है तो ऑलरेडी वी आर हैविंग फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला वाज concentration of common ion, which is Ba2 plus here, will be equal to under root Ksp1 plus Ksp2, and that has been given as 1.844 into 10 raised to minus 5, and that's why we are saying Ksp1 plus Ksp2 will become square of that, and देखो hint में दिया हुआ है 1.844 के square को we can assume as 3.4. So we have got this calculation as 3.4 into 10 raised to minus 10. Now it is also giving you the value ratio of these two KSP. We can assume that to be 5x and 12x है ना. So if I am assuming कि पहला वाला 5x है, दूसरा वाला 12x है, तो फिर ये बता रहा है कि x has become 0.2 into 10 raised to minus 10. Sorry, 0.2 into 10 raised to. तो हम लोगों ने क्या assume किया that KSP1 is 5x and KSP2 is 12x. That was our assumption, and in that we have got x ka value. So we have got first way KSP of BaSO4 is nothing but 5x, and that's why it becomes 1 into 10 raised to minus 10. KSP of BaCrO4 becomes 12x, and that's why it becomes 12 times 0.2 into 10 raised to minus 10, and that becomes 2.4 into 10 raised to minus 10. तो ये दोनों आंसर हो गए। फॉर द सेकेंड पार्ट, जो कॉमन आयन नहीं है उसके लिए सॉल्विटी हम लोगों ने S1 और H2 भी बताया था। तो सल्फेट आयन इज नथिंग बट S1 which was KSP1 upon the common ion, and that's why ये KSP1 जो आया that is 1 into 10 raised to minus 10, and common ion का concentration is 1.844 into 10 raised to minus 5. अभी देखो इसको जरा सा इजी कर सकते हैं, बहुत तो नहीं आएगा। इफ आई से दिस वन इज रूट 3.4, तो ऊपर नीचे रूट 3.4 से रूट 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो विल बी गेटिंग अंडर रूट 3.4 अपॉन 3.4 है ना, इनटू 10 रेज़ टू माइनस 5, एंड दैट विल गिव यू स्लाइटली इजियर, बहुत इजी तो नहीं हुआ, फिर भी स्लाइटली इजियर कैलकुलेशन, दैट वी कैन से दिस इज this much into 10 raised to minus 5. Is it okay? दूसरा आयन जो है that is CrO4 2 minus, that was S2, so it will become KSP2 upon Ba2 plus, and that's why it will become 2.4 into 10 raised to minus 10 upon 1.844 into 10 raised to minus 5, and that's why देखो ना, अप्रोक्सीमेशन अगर करोगे तो 2.4 by 1.8 ले लोगे तो 4/3 आ जाएगा ना, तो 1.33 से जरा सा कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.3 कर सकते। If I do the exact calculation now, it is coming 2.4 divided by 1.844, देखो 1.301 आ रहा है, this is a valid assumption, ये चलेगा। अगर वो वाला देखो तो 18/36 होता तो 0.5 आता, अभी उससे जरा सा कम है, नीचे कम है, तो that value will be slightly more than 0.5 है ना, 0.542 आ रहा है, this is 0.542 into 10 raised to minus 5.
ओके, क्लियर है ये? बट ये तो रटा रटा है, फॉर्मूला पे था. इफ आई डोंट गिव यू द फॉर्मूला तो देन हाउ टू डू दैट, ये जरा सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. इफ आई डोंट हैव द रटा रटाया फॉर्मूला, कुछ नया केस दे दिया, ये मैंने ऐसे करवा दिया तुमको, इनडायरेक्टली करवाया था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में. बट एक बार ट्राई करके देखो, नंबर सेट करके दिए तो कैलकुलेशन शुड नॉट बी डिफिकल्ट. Okay, we have got one answer. Let's wait. Okay, Harsh and Geet have got different answers. चलो, पहली बात, they are not AB type. So whatever formula we had derived ना, वो तो AB type का था जिसमें, है ना, ये इसमें AB dash type का था, तो जाके ये formula आया था, which was valid in case of first question, but it will not be valid in the case of second question. That's why we need to know the fundamentals.
जैसे उधर किया तो वैसे यहाँ पे करेंगे, बट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द कोफिशिएंट्स नाउ. We'll write Mg2 plus 2F minus. And वैसा ही, if I am having SRF, so this will be giving you SR2 plus 2F minus. Assume that कि इसकी solubility जो है ना वो S1 है और इसकी solubility जो है वो S2 है. If the solubility of MgF2 is S1, the ion which is not common will have concentration S1 के बराबर, क्योंकि coefficient भी 1 है. And वैसे यहाँ पे इसका concentration will become H2. This is the situation at saturation. Now at saturation, if this one is S1 and this one is S2, तो फिर F minus in first reaction will be formed as 2S1, and in second reaction the formation will be 2S2, and that's why we'll be putting 2S1 plus 2S2 in both the places, and then we'll write at saturation Mg2 plus into F minus square will be equal to Ksp1, which gives you S1 into 2S1 plus 2S2 का square is equal to Ksp1. I'll call it equation 1. Similarly, ये भी जो at saturation situation दिया हुआ है, we'll write SR2 plus into F minus का square will become Ksp2, and that will give you S2 into 2S1 plus 2S2 whole square will be equal to Ksp2. And now we have got both the equations. और इसमें हर बार यही करना कि ऐड कर देना, अपने आप कुछ ना कुछ निकल के आएगा. इफ यू ऐड दिस टू ना, तो देखो क्या हो रहा है ना, एक तो 4 निकाल लो और उसके बाद S1 plus S2 raised to 3 आ जाएगा. तो दिस विल गिव यू 4 times S1 plus S2 raised to 3 is equal to Ksp1 plus Ksp2. And that's why the value of S1 plus S2 is coming Ksp1 plus Ksp2 upon 4 raised to 1 by 3. Are you getting a pattern? कुछ पैटर्न जैसा दिखा क्या? पिछली बार आया था Ksp1 plus Ksp2 raised to half. This time I am getting Ksp1 plus Ksp2 by 4 raised to 1 by 3. सर AB2 टाइप के सॉल्ट्स में 4s क्यूब होता था ना. हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने Ksp by 4 raised to 1 by 3 किया. This time we are getting summation of Ksp by 4 raised to 1 by 3. And that is the value of S1 plus S2. Now if you solve it, now we are getting 13.5 into 10 raised to minus 9 by 4 raised to 1 by 3. If you check that, now we'll be getting 3.375, which is the cube of 1.5. It will simply give you this much. But is it the answer? क्योंकि गीत ने तो यही रिपोर्ट किया है. Is it the answer? No, right? Why? So to multiply by 2, right? हाँ, क्योंकि F minus was not S1 plus S2, it was 2 times S1 plus S2 है ना. So that's why if it is asking F minus का concentration, we'll write it was 2S1 plus 2S2. That means it was 2 times 1.5 into 10 raised to minus 3. And that's why it will become 3 into 10 raised to minus 3. Okay, and that will be the answer. Or you can write 0.003 जो कि कृष्ण ने report भी किया था. Is it okay? Now we can handle any situation, है ना. तो ऐसा कुछ भी वो दे दे, A2B, AB2, ऐसा कुछ भी दे दे. This is the general method which we need to follow. While doing that, we need to take care of the coefficient because coefficient will be coming twice. एक बार तो solubility के terms में concentration निकालने में, और दूसरा it will also be appearing raised to the concentration. And that's why we need to be very careful about the situation in which we are not having AB. It is A2B, AB2, ऐसा जब भी आ गया तो we need to take care of the coefficient twice. एक बार जब हम लोग concentration निकाल रहे, दूसरी बार raised to concentration, power raised to the concentration के टाइम पे भी. Is it okay?
चलो, तो ये था हमारा तीसरा केस. नाउ वी आर कमिंग टू the case in which we'll be talking about if I'm creating a situation which will cause the conversion of these aqueous ions into solid substance. That is nothing but precipitation. That has been given an English word which is called precipitation. So whenever we are having the situation in which we are getting a backward shifting for all these reversible reactions at saturation, we will say that there will be precipitation of the salt. And for that, we need to identify the condition. That's why we are moving to the next section, which is called precipitation. Simple सी कहानी है. Backward shift का मतलब क्या था? Q greater than K है ना. So this time we'll be saying कि QSP will be greater than KSP पे precipitation होगा. If Q is equal to K, तो यहाँ बोलेंगे this was at equilibrium or at saturation. That means solution is saturated. There is no precipitation. If Q is less than KSP, तब तो forward shift होने वाला है. Forward shift का मतलब we can more dissolve more salt even, है ना. तो definitely there is no precipitation. But if I am having Q greater than K, there will be backward shift ना. और backward shift का मतलब क्या है? Aqueous ions are forming solid substance which is called precipitation. And that's why if they are asking you in different situations in which case precipitation will occur, we'll find out the comparison between Q and K. If Q is coming greater than K, then we'll say कि it will be having precipitation. Is it okay? Simple ना. बस इतनी सी कहानी है, इसी पे क्वेश्चन करेंगे. Anyone having any doubt? चलो इतने पे ही कर लेते हैं. Solve this question. Have I repeated the question? Question number 1 and 2, are they same or different? क्योंकि नंबर्स तो मुझे साफ साफ सेम दिख रहा है. ये कॉपी पेस्ट हो गया 2 बार क्या? Anyone? I don't think they're same, sir. Why? तो सेम नहीं है ना. What is the difference? सर Like एक दूसरे में वाले में मिक्सिंग हो रहा है और एक में डिसोल्यूशन हो रहा है. Okay, in first case we are mixing the two solution. I told you in this case whenever we are mixing the solution, we need to calculate concentration just after mixing, and that will become the concentration जिस पे काम करना है. But in second case I am having 1 liter of one solution and I am adding some mole, so I am not changing the volume, है ना. But in the first case volume is getting changed because you are mixing equal. मान लो 1 liter पहले का 1 liter दूसरे का mix किया ना, तो we have got 2 liters. So individual concentration जो before mixing आ रहे थे ना, वो half हो जाएंगे after getting mixed. चलो सॉल्व करो, इसको बताओ. नंबर्स मैंने ऐसा कुछ सेट किया है ना कि हो सकता है तुमको डिफरेंट रिजल्ट आ जाए, हो सकता है सेम भी आ जाए. आई डोंट नो दैट.
Okay, Chris has given the answer. So first question, I told you whenever we are mixing the solutions, just after mixing, you need to calculate the concentration. So concentration of AgNO3 has become 5 into 10 raised to minus 6 by 2 because we have mixed the equal volume. So concentration will become half. And that's why concentration of Ag plus from this AgNO3 will also become 5 by 2 into 10 raised to minus 6 because one salt is giving you one cation. Similarly, we'll calculate NaCl ka concentration will become 4 into 10 raised to minus 6 minus 5 upon 2, which is 2 into 10 raised to minus 5. And that's why concentration of Cl minus from NaCl is also coming 2 into 10 raised to minus 5 again because each salt is giving you one anion. And that's why after that, if I want to calculate QSP, it will be concentration of Ag plus raised to 1 into concentration of Cl minus raised to 1, which is coming 5 by 2 into 10 raised to minus 6 into 2 into 10 raised to minus 5, which is 5 into 10 raised to minus 11, or we can write this is 0.5 into 10 raised to minus 10. That is definitely less than KSP, because KSP is 10 raised to minus 10. And that's why we'll say in this case, as QSP is still less than KSP, we'll say no precipitation. Okay. But if you go at the second case में तो सीधा ही है. We have got Ag plus from AgNO3 is 5 into 10 raised to minus 6 and Cl minus from NaCl because the volume is not changing. So it will be 4 into 10 raised to minus 5. And now in this case, if you calculate QSP, so QSP, which is Ag plus raised to 1 into Cl minus raised to 1 will become 20 into 10 raised to minus 11, or which is 2 into 10 raised to minus 10. And that is greater than KSP because KSP was simply 1 into 10 raised to minus 10. And that's why we are saying ki as QSP has become greater than KSP, precipitation will occur. Okay, any doubt? चलो next question देखते हैं. Okay, solve this question. Solve this one. And you can have one or more than one.
Okay. Hers and Chris have got different answers. तो एक ही बार में सॉल्व करते हैं इसको. We are talking about after mixing, obviously, because they are mixing equal volume. So we need to be very careful. Ca2 plus कितना है, F minus कितना है, what is QSP and KSP तो पता ही है. It is every time it is 1.7 into 10 raised to minus 10. So in case of A, we have got this one is 10 raised to minus 4 by 2 हो जाएगा ना, because we are mixing equal volumes है ना. So we need to be very careful about that. So this is 10 raised to minus 4 by 2 and this is also 10 raised to minus 4 by 2. Now QSP जो है ना, that will be actually Ca2 plus into F minus का square. QSP is Ca2 plus into F minus का square. And that's why it will become 10 raised to minus 4 by 2 into 10 raised to minus 8 by 4, which is giving you 1 by 8 into 10 raised to minus 12. तो हाँ जी. सर F माइनस के कॉन्सेंट्रेशन में मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं होगा? क्या मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों होगा? ये तो मैं बाहर से ला रहा हूँ ना, ये रिएक्शन में बन थोड़ी रहा है. समझा हाँ. Okay, so this can be written as, if you see it ना, सेम फ्रेम में लाना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी आर गेटिंग 12.5 into 10 raised to minus 10. Definitely greater than KSP ना. 1 मिनट, क्या किया मैंने, 10 raised to minus 12 था ना, सॉरी, वो तो और छोटा हो जाएगा. तो दिस विल बिकम एक्चुअली 10 raised to minus 10 में करोगे तब तो और छोटा हो जाएगा. So it will become 1 by 800 into 10 raised to minus 10. Definitely less than KSPN. So not our answer, because it is asking किसमें product बनेगा. Precipitation will occur पूछ रहा है, so not our answer. Similarly, B में we have got now the idea. 10 raised to minus 2 by 2. This is 10 raised to minus 3 by 2. So this will become 10 raised to minus 2 by 2 into 10 raised to minus 6 by 4. And that will give you 10 raised to minus 8 है. तो ये जो आएगा ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 12.5 into 10 raised to minus 10. And this is greater than 1.6, 1.7 into 10 raised to minus 10 है ना. तो यहाँ पे we'll write that this is greater than 1.7 into 10 raised to minus 10. तो यहाँ पर definitely precipitation होगा. C में similar way में अभी तो आ गया आइडिया. If it was one option correct ना, तो मैं सीधा B check करता. Why? If it was just one option correct, why should I check only B? Any idea? कुछ तो बोलो. तो अगर हम लोग F माइनस को स्क्वायर भी करते हैं तो लाइक टोटल जो ये आता है, मतलब 10 raised to minus 6 plus 10 raised to minus 2 होगा ना. See ना, this is the set of highest concentrations of the ions है ना. Out of all the given concentrations, ये highest concentration वाला set मिला है अपने को है ना. 10 raised to minus 2 and 10 raised to minus 3 सब जगह देखो उससे तो कम ही है. तो if in one case precipitation is going to happen ना, this will be B only. अगर B में नहीं हुआ तो किसी में नहीं होगा. Is it okay? Clear ना. देखो ना, 10 raised to minus 2 is the highest concentration of Ca2 plus out of all these cases, and 10 raised to minus 3 is also highest for F minus. So अगर एक जगह Q greater than K आने वाला है ना, तो वो that will be B option only. उसके बिना तो होगा ही नहीं, बाकी तो हो ही नहीं सकता फिर उसके कंपैरिजन. If it was one option correct, तो ये हो जाएगा 10 raised to minus 5 by 2
into 10 raised to minus 6 by 4. और ये भी चेक कर लोगे, this will be coming less than 1.7 into 10 raised to minus 10. And similarly D में, so this will not be the answer. And last वाला भी 10 raised to minus 3 by 2, 10 raised to minus 5 by 2. If you calculate it, 10 raised to minus 3 by 2 into 10 raised to minus 10 by 4, ये तो और भी कम हो गया. So that's why this is also not the answer. मैंने बोल दिया तो one or more than one correct, but इसका सिर्फ आंसर B था, बाकी सब wrong थे. Is it okay? But this was the method. अगर one or more than one correct बोल दिया तो you have to check every option. Okay? चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं अभी. जरा पीएच से इसको कनेक्ट करते हैं. इस बार के क्वेश्चन में भी पीएच से कनेक्ट किया था, लेकिन वो कहानी आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था. अभी जो हम लोग देखने वाले, सिंपली इट इज आस्किंग यू कि इफ यू आर मेंटेनिंग अ पीएच, at what pH the precipitate of MgOH twice will start to form. Solve this one. Okay. Geet, above 9 or below 9? Okay, Harsh is saying above 10, not above 9. Okay, let's see. For precipitation, we have learned just one thing, that QSP should be greater than KSP, है ना? Which means in this case, concentration of Mg2 plus into OH minus का square should be greater than KSP. And that's why the situation for OH minus must be like it should be greater than KSP upon Mg2 plus raised to 1 by 2. Oh, sorry, not this one. हाँ, ठीक है? Is it okay? Clear ना? Which says OH minus should be greater than 10 raised to minus 11 upon 10 raised to minus 1 raised to half, which says OH minus should be greater than 10 raised to minus 5. जरा log लगा के माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा POH, बिकॉज माइनस लगाए तो दिस शुड बी लेस देन 5, है ना? And if POH is less than 5, it means pH should be greater than 9. Is it okay? हर्ष किधर गड़बड़ हुआ? So I think that OH, I didn't do the OH squared, if I'm not wrong. तो करना पड़ेगा ना. We need to know the formula is MgOH twice. तो मैंने इसलिए बार बार बोला है
We need to be very careful about the coefficients because the formula is not AB type. तो वो दो बार आता है ना, जब फॉर्म कर रहे हैं तो भी आता है, रेज टू में भी आता है. तो wherever we are having रेज टू सम कोफिशिएंट ना, तो वहां पर बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा. चलो एक और करते हैं क्वेश्चन. इट इज लाइक क्वालिटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में. वही कहानी है. वी हैव लर्न दैट इफ वी आर गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ बैकवर्ड शिफ्टिंग, दैट मींस प्रेसिपिटेशन विल अकर, है ना. एंड दैट्स व्हाई उसी की बेसिस पर आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन. क्या हो गया क्रिश, कुछ क्लास है क्या, या थक गया? हाँ सर, थक गया वो. अच्छा ठीक है, इसके बाद वाला सेक्शन नेक्स्ट डे कर लेंगे. चलो सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन. क्रिश देखना, डेल्टा एच का साइन दिया है. हाँ सर, इसलिए बस कंफर्म कर रहा था. पॉजिटिव हो तो देखो. अभी अगेन कुछ लोगों को मैं फंसते हुए देख रहा हूँ. इफ आई से ना PbCl2 एंड Pb2 प्लस, नॉट इन दिस केस बट कहीं पर ऐसा कुछ आ जाए, A गिविंग B प्लस C, ऐसा कुछ आ जाए, एंड रिएक्शन के अंदर प्लस x किलो जूल लिखा है, दैट पॉजिटिव साइन डजंट टेल यू कि ये एंडोथर्मिक है. मान लो कुछ मैंने ऐसा बोल दिया, A सॉलिड इज गिविंग यू B एक्वस प्लस C एक्वस प्लस x किलो जूल. इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन के अंदर दिखा रहा है कि दिस इज द प्रोडक्ट, है ना. दिस हैज बिकम वन ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज, दिस फॉरवर्ड इज एक्सो. बट यहां जब लिख रहा है ना, इट इज गिविंग यू द साइन ऑफ डेल्टा एच नॉट एज पॉजिटिव, सो दैट मींस इट इज फॉरवर्ड इज एंडो, है ना. दिस फॉरवर्ड इज एंडो एयर. चलो देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ा है उसी का ये है. अच्छा एक बात बताओ, मेरा आंसर इंक्रीज कब आएगा, जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट. Why? Because it is asking you amount of dissolved PbCl2, not the solid one. And that's why we need to work for, whenever we'll be getting forward shift, I'll say it will increase. If I'm getting backward shift, we'll say decrease. If I'm adding solid PbCl2, कौन सा shift दिख रहा है? फॉरवर्ड. Why, Harsh? Oh wait, sorry, no shift. It's not in the phase. नो शिफ्ट. This is solid. It doesn't have any effect on Q or K, and that's why we'll say no change. Is it okay? We need to be very careful. More water is added then. इंक्रीजेस. Increase. Why? So forward shift. Increase in volume. Okay, दो तरीके से देख सकते हैं. If I'm adding water, that means I am giving it more volume, and volume बढ़ाने से shifting उधर होगी जिधर aqueous ions बढ़ेंगे, and that's why we'll say forward shift, and that's why it will increase. और otherwise दूसरा तरीका क्या है? If you are adding the water, the concentration of ions will decrease, है ना, and that's why Q will decrease. If Q is decreasing, it will become less than K, and that's why there will be forward shift. NaCl is added. Backward shift. Cl minus will cause backward shifting, and backward shift will decrease the amount of dissolved PbCl2. So decrease. NaNO3. Forward shift. नो Why? चेंज. Na plus will react with Cl minus. NO3 minus will react with Pb2 plus. हाँ,
सॉल्यूशन के अंदर वैसा कुछ होता है क्या? So no change ना, common ion effect will नहीं होगा. remain in reaction in solution. NaCl तुम बना के वैसा भी छोड़ोगे तो that will be in the form of Na plus and Cl minus. Is it okay, Harsh? Yes, sir. Whenever you are adding Na plus ना, it will remain in the form of Na plus. इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है NaCl के साथ सॉल्यूशन में NaCl बनाने का. If you remove all the water, then it is going to form the NaCl. Otherwise, it is not formed, and that's why there is no common ion effect or nothing. Is changing the value of Q or K, and that's why we'll say no change. And the last one, Backward shift. टेम्परेचर बढ़ा तो एंडो शिफ्ट बोला था ना, तो टेम्परेचर कम हुआ तो एक्सो शिफ्ट विच इज बैकवर्ड, एंड बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब है डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ PbCl2 विल डिक्रीज. इज इट ओके? एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो नेक्स्ट डे विल स्टार्ट. That will be the toughest section of mains but easiest section of advanced obviously. उसको हम लोग बोलते हैं selective precipitation. नेक्स्ट डे उसी को स्टार्ट करेंगे, एंड देन आई थिंक कि 2 सेशन में आई थिंक वी शुड फिनिश द चैप्टर. एक सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है, और उसके बाद मैंने जो बताया कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे विल सी द इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी आल्सो. तो दोज केसेस विल कवर, एंड देन विल गो टू इंडिकेटर, दैट इज द लास्ट सेक्शन. ओके, चलो क्लोज करते हैं फिर, है ना. नेक्स्ट डे विल कवर दिस पार्ट. Sir, just one doubt. Yeah. Sir, आपके वो मॉड्यूल्स अब तक नहीं आए, सिर्फ मेरे को नहीं आए कि? अरे क्या हुआ ना, कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली. मुझे लगा विमी मैम इज प्रोसेसिंग दैट, बट शी टोल्ड मी कि एक बार बात कर लेना, उसके बाद मैं प्रोसेस करवा दूंगी, और मैंने बात कर किया ही नहीं. तो आज मैंने बात किया है उससे. ही प्रॉमिस दैट कि 4-5 दिन में वो प्रिंट करके फिर आगे बढ़ा देगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट डे विल सी सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, चलो क्लोज करते हैं ना. Bye sir, thank ओके, you. बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir.